Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to physics class. This is lecture number 28. Today we are going to start the numericals of chapter number 4, that is motion and force, given on page number 69. The first question is, determine the acceleration of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it. Before starting the question, we must review all the formula that we have done in chapter number 4, and I also advise you to write down all these formulae in on the title page which you make for chapter number 4 numericals, so that it will be easy for you to understand what new formula you have learned in this chapter, in the chapter number 4. So we have learned the first formula. We have learned according to Newton's second law of motion, F is equals to ma. Then I told you that force is also weight is also the force, but just we replace the acceleration with the acceleration due to gravity. Then weight becomes W is equals to mg. Then we have also learned F is equals to mu r. Then according to law of conservation of momentum, we have learned momentum before collision equal to momentum after collision. So m1 u1 plus n2 u2 equal to m1 v1 plus n2 v2. Then we have learned the formula for the acceleration and tension in two cases. Case number 1, when the two bodies are hanging vertically, so the formula for acceleration is m1 minus n2 upon m1 plus n2 into g. And the formula for tension is 2m1 n2 upon m1 plus n2 g. Then we have learned one more case, case number 2, that is when one body is moving horizontally and the other is hanging vertically. So at that time the formula for acceleration is a is equals to m1g upon m1 plus n2. And the formula for the tension is m1 n2 upon m1 plus n2g. So these are the formulae you must write down on the title page of the numericals chapter number 4. Okay. Then we have to come to this 4.1. Here mass is given. Mass of a car is 900 kg and the net force is given, that is 2700 Newton. So just we have to solve the question by using the first formula, that is F is equals to ma. According to Newton's second law of motion, F is equals to ma. Okay. Now here we have to find out acceleration. No? So what we'll do, we'll separate out this a and multiply this and take this m on the other side of the equation, so it would divide by f upon m. मतलब कि m a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू को दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा a is equals to f upon m. Okay. Now what we have to do next, we have to write down the values. F is equals to, how much force is given here? 2700 Newton. 2700 Newton. Divide by the mass given is 900 kg. Okay. So these two zeros will be divided by these two zeros, and acceleration becomes 9 as a 9, 9 is a 27. So 3 meter per second square is the acceleration produced in the car. Okay. Having the weight, having the force, the mass is given, the having the mass of 900 kg. So the result would be the acceleration of a car is 3 meter per second square. Okay. That's all for this question 4.1. Just we have to divide the net force with the mass and we will get the acceleration. Okay. Now let's move to other question. Now let's do question 4.2. It says a car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meters. Find the average acceleration. Find the average braking force. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार है जिसका मास कितना बताया है 1000 kg.
जो कि 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। ये कार 40 मीटर का फासला करके क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन पे आ गई। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर वी आई भी गिवन है और वी एफ भी गिवन है। वी आई क्या है, जिस वी आई 72 किलोमीटर पर आवर है, जिस स्पीड से कार मूव कर रही थी, और फिर 40 मीटर का रास्ता कवर करने के बाद क्या हुआ, गाड़ी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई। सो वी एफ बिकम्स 0, ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ गुस्टर चैप्टर नंबर 3 में कि किलोमीटर हमारा SI यूनिट नहीं है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू मीटर्स and we have to convert hours into seconds. Okay, so you all of you know that 1 kilometer is equals to 1000 meter and 1 hour is equals to 3600 seconds. This is all we have done in our previous classes as well. So just we have to multiply 72 with 1000 and we will divide this 72 by 3600 because 1 hour per hour कहाँ है, अपॉन में है। तो हम बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए जैसे किलोमीटर से हम जा रहे हैं, किसमें, किलोमीटर से हम जा रहे हैं मीटर्स में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, किसको, 72 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और 1 आवर को जो कि बड़ा यूनिट है सेकंड्स के मुकाबले में, तो 1 आवर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3600 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। 36 टू द 72 और ये दो जीरो से कट गए तो 2 10 20 मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम करना है इसका एक्सीलरेशन, हमें इसमें मालूम करनी है ब्रेकिंग फोर्स, मीन्स कि गाड़ी जो है वो रुक रही है ना, जो ब्रेक लग रहा है, तो वो फोर्स हमें मालूम करनी है। सही, formula we have already discussed this formula, F is equals to ma, and we also use this formula 2as is equals to vf square minus vi square, which we have done in our previous chapter number 3. See, we have this 2as is equals to vf square minus vi square। हमने a को सेपरेट आउट कर दिया क्योंकि हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो इट बिकम्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और ये 2 और s इस a से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू 0, ओके, 0 का स्क्वायर, और vi आपका कितना है 20 का स्क्वायर कर लिया आपने, सही है, अपॉन 2 into 40, बिकॉज डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 40 मीटर्स, डिस्टेंस आपको 40 मीटर्स गिवन है। vi आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है और vf आपके पास 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a is equals to 0 का स्क्वायर 0 minus 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 240 जा 2 4 जा 8 and 2 0 are 0, okay, तो ये कितना आ जाएगा, a is equals to minus 400 divide by 80, so कितना आ जाएगा 0 से कट गया, 8 1 जा 8 8 5 जा 40, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं 0 से 400 माइनस किया तो -400 आया, क्योंकि माइनस ये बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं और साइन बड़े वाले की अलग होती है। और ये वैसे भी एवरेज ब्रेकिंग फोर्स है, मींस कि सॉरी ये है डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव एक्सप्रेशन इसलिए आ रहा है कि गाड़ी जो है वो चल रही थी और चलने के बाद क्या हुई, रेस्ट पोजीशन पे आई रुकी है, लिहाजा एक्सप्रेशन वापस क्या आएगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगा या रिटार्डेशन आएगा कि गाड़ी रुक रही है। अब हम मालूम करते हैं क्या, F is equals to n का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम फोर्स मालूम करेंगे। F is equals to 1000 मल्टीप्लाई, अभी भी एक्सप्रेशन निकाला कितना है -5, ओके, सिंस इट इज एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, सो ये भी हमारे पास कितना आएगा -5000 न्यूटन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, you have to write down the answers, final answers in the bracket, okay. A is equals to this is like this, okay, and then you write down the average acceleration is -5 meter per second square and the average braking force is 5000 Newton. Don't forget to write down the units because units are very important to represent. Units are very important to represent the number. Now the homework for the day today is you have to do
question number 4.1 and 4.2 of chapter number 4 in your register. But before then that, you must write down all the formula of this chapter on one side. So that's all. We'll meet in the next class with the new lecture. Till then, Allah Hafiz.